Now, as we approach the polls, we at Brand Equity decided to launch a special initiative. The context being that India is a secular democratic republic and the largest democracy in the world. What is therefore key is voters' participation in this democratic and electoral process. It is integral to the successful running of any democracy and the very basis of wholesome democratic elections. It is Brand Equity's endeavour to get citizens of India to cast their vote on polling days. So we invited 3 top-notch advertising agencies and asked them to use their ingenuity and create campaigns that would motivate India at large to go out there and cast their vote. What we need you to do is sit back, relax, but be alert and take down your jottings on all the campaigns that will be presented to you. We then need you to cast your vote for the campaign that you deem as most effective. Let the show begin. 5 साल आपका पैसा लूटा, दवाई मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, पानी मुफ्त। पूरी रोटी से पूरी रोटी में अगर 60 साल लग गए तो पेट भर रोटी में और 100 साल लगा देंगे, 100 साल लगा देंगे। On the 7th of April, the world's largest democracy will hit the polls. The general election will be held in 9 phases, the longest election in the country's history to constitute the 16th Lok Sabha in India. This will also be the costliest general election in the history of the country, with the Election Commission of India estimating that the election will cost approximately 3,500 crore rupees, excluding the expenses incurred for security and individual political parties. According to the Election Commission of India, the electoral strength for 2014 is 814.5 million, the largest in the world. There has been an increase of 100 million newly eligible voters, so we at Brand Equity decided to embark on a special endeavour to help contribute to the growing numbers of voters in the country. We invited 3 leading advertising agencies, Publicis, McCann and Leobinet, and asked them to use their creativity and develop campaigns that would motivate India at large to go out and cast their vote. Here's a look at their entries. मिस्टर कामत, 500 करोड़ के स्कैम का जवाब आप नहीं देंगे तो और कौन देगा? आम आदमी को इस महंगाई से आखिर कब छुटकारा मिलेगा? दिन दिन रेट की वारदातें बढ़ रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्रिमिनल्स को टिकट देना कब बंद करेंगे आप? बताइए कब? आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए मिस्टर कामत। बताइए मिस्टर कामत, बताइए। अब जुबान पे ताला क्यों लग गया? पर आप मुझसे क्यों पूछ रहे? मैंने तो कुछ नहीं किया। वही तो, आपने कुछ किया ही नहीं। वोट करना आपकी जिम्मेदारी है। इससे मुंह मोड़ेंगे तो सवाल आप पे भी उठेंगे। What's up, dude? वादा है कि अरेंज मैरिज इलीगल कर दूंगा, कॉलेज बंकिंग, बाइक पर ट्रिपलिंग लीगल कर दूंगा। हमारी कोई औकात नहीं है। उधारी पे होगा युवाओं का हक, ढाबे खुलेंगे सुबह 4 बजे तक। हमारी कोई औकात नहीं है। डेटिंग और डिस्को अलाउंस मिलेगा, पब्लिकली रोमांस का चांस मिलेगा। बाबा, तुम भी कुछ बोलो। मी टू, टैटू। वैलेंटाइन डे को नेशनल हॉलीडे होगा, आई सपोर्ट सबको आईपैड मिलेगा। अरे बाबा, पेट्रोल, इंटरनेट, फेसबुक फ्री। 10 मिनट में पिज्जा डिलीवरी। They know the power of your vote. Do you? Dear 12 crore first-time voters, we are more than the number of votes the winning party got in the last election. Take a note. Cast your vote. Like, I agree, but there's not a single decent-looking politician here. I mean, look at all of them. It's like Buddho ka overdose. How can they make India look so bad, yeah? I really don't. Now look at him. He's just so cute and charming. He's so young. He speaks so well, yeah. He's just... You ever heard him speak? Yeah. I saw that video, but I felt so bad for him. I mean, imagine someone badgering you like that, yeah? Even you would fumble. Even I would fumble, yeah. That's so human. That's why I like him. He's just so cute. And I love his dimples. They're just so cute. यार इस डेमोक्रेसी को ना हम बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते। मैं तो कहता हूँ सभी फसाद की जड़ यही है बस। इसकी सुनो, उसकी सुनो,
सबको सुनने के चक्कर में क्या हो रहा है, झेल रहे हैं ना हम लोग। मैं तो कहता हूं किसी मर्द के हाथ में दे देना चाहिए था, ये सब लाइन पे आ जाएंगे। बहुत साल पहले ही दे देना चाहिए था। मेरे दादाजी कहा करते थे, छड़ी बाजे छम छम, विद्या है घम घम। बस टीका ही ठीक है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैसा बेहतरीन ऑफर जैसे ना आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा। नो नीड टू बाय एनीथिंग, नो स्क्रैच कार्ड, नो लकी ड्रॉ। एक ब्रांड न्यू कार आपको मिल सकती है बिल्कुल मुफ्त। बस एक सिंपल सा काम करना है, इस सिलेक्शन वोट कीजिए, हमें अपने वोट की इंक लगी हुई उंगली दिखाएं और इस शानदार कार घर ले जाएं बिल्कुल मुफ्त। अगर ऐसा होता तो वोट जरूर करते ना। थोड़ी शर्म करो, वोट करो। जवाब दीजिए मिस्टर कामत। If you are as excited about these campaigns as we are, fret no more. The campaigns are up on facebook.com/brandequity. Log on to see the ads, cast your vote and decide which of these 3 celebrated agencies will be Brand Equity's Vote India's Viewers' Choice Award winner. You can also cast your vote by emailing us at brandequity@etnow.tv. Joining us next week to discuss, debate and deliberate these 3 campaigns will be an elite panel. They being Akshay Rao, Director General Election Commission of India, Milind Deora, Union Minister of State for IT and Communications, Anupam Kher, a renowned Bollywood actor, Amitabh Kant, Secretary Industries, Government of India and Architect of Incredible India, and Piyush Pandey, the advertising veteran, also Executive Chairman and National Creative Director, Ogilvy and Mehta, India. Watch our Vote India special on Wednesday, the 2nd of April 2014 at 10:30 p.m. to find out which campaign emerges as the winner. The winning campaign will then be presented to the Election Commission of India to use as their own.